Good morning and welcome everyone to this amazing channel of Shade. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रहेगा। एंड स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो नीट और जेईई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So electrostatics is basically the study of electromagnetic phenomena. Study of electromagnetic phenomena that occurs when there are no moving charges. In simple words, you can say it's the study of charges. It's study of static charges. Static charges, or I can say static electricity, right? So अभी हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, राइट? स्टैटिक चार्जेस, मूविंग चार्जेस। सो मैटर ये है कि चार्ज होती क्या है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? Basically, electric charge is a property. Electric charge is a property associated with matter due to which produces and experiences electric and magnetic effects. चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील और प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? अगर मैं बात करूं कोई भी है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? सो चार्ज इज बेसिकली एसोसिएटेड विद मास, राइट? जैसे मास हर ऑब्जेक्ट के साथ एग्जिस्ट करता है, चार्ज भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट विद मैटर। नेट चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, राइट? नेट चार्ज जीरो हो सकता है बट चार्ज कभी जीरो नहीं। I mean that if a body is a neutral, it means the net charge on a body is zero. It doesn't mean that the body doesn't have any charge. It means if a body has net charge zero, the positive charge is equal to negative charge, right? Now we are going to talk about the properties of charges.
मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा थियोरेटिकल हो रहा है, बट चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी रहती है, एक दो लेक्चर थ्योरी रहती है, उसके बाद हम ई लेवल के कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे, राइट। तो अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर वन की बात करूँ, प्रॉपर्टी वन नंबर वन की ये कहती है रेस्ट चार्ज, चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट produces only electrical effects, right? मतलब जो चार्ज रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो है, तब वो चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ही प्रोड्यूस करता है। प्रॉपर्टी नंबर टू इज चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी produces both electric and magnetic effects. That charge with constant velocity, yeah? That means acceleration is zero. So acceleration zero, right? Third property is charge with acceleration and accelerating charge. Accelerating charge produces electric effects, comma, magnetic effects, and also radiates energy, right? ये जो एनर्जी रेडिएट करता है उसके लिए एक एक्सेलरेटर आता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर बोलते हैं उसको, जिससे हम चार्जेस को एक्सेलरेट करवाते हैं हाई स्पीड पे। उस स्पीड्स पे एक्सेलरेशन पे चार्जेस जो होते हैं काइंड की एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेस है उसको फॉर्म करेंगे, राइट। सेकंड फोर्थ प्रॉपर्टी कम्स इज द यूनिट, प्रॉपर्टी fourth is unit of charge is coulomb. And is denoted by C. उसको C से represent किया जाता है. Fifth is dimensional formula. चीज है कि चार्ज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानते. करंट इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी. यस, यू कैन मेक इट राइट. सो अभी के लिए मैं बताऊँ तो इलेक्ट्रिक करंट is charge flowing through an cross section per unit time. Hmm? So that is Q by P. Charge per unit time is current. That means the dimensional formula of charge, can I write that is A1, P1, right? Because current is a fundamental quantity, I am writing charge in terms of current into time, which gives the dimensional formula of charge as A1 T1, or you can also write I1 T1.
Okay. Sixth thing I would like to talk about charges is that it is a scalar quantity, right? That means charges can be added algebraically. Okay. Sixth is something called this constant value E. Electronic charge is called. Electronic charge that is represented by small e. Its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. See, this some things are to be remembered. ये कुछ चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी. First या second, most probably in the first lecture I will complete all the theoretical portion. और second lecture से हम डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट कर देंगे. सो पहले लेक्चर में थ्योरी रहेगी, हर चैप्टर में रहेगी, तो दो कोऑपरेट, राइट. Second constant is charge on electron. It is minus e coulombs. Okay. Charge on proton, if I write, that is plus e coulombs. And charge on neutron is 0 coulombs. Okay. Now, this positive and negative साइंस जो भी है वो एक आर्बिट्ररीली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने असाइन किया हुआ, राइट. तो बहुत ज्यादा माइंड पे मत लेना इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस की मैं बात करूँ तो दो ही टाइप के चार्ज है, ऑफ कोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट. टाइप्स ऑफ चार्जेस. Basically these are divided into two, as we all know. First is positive charge, another is negative charge. अह, एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ. हालांकि आपने ये अगर केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, मोर टू बी मोर स्पेसिफिक, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ी होगी, बट फिर भी मैं थोड़ा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँ, अगर किसी ने नहीं किया है तो. कोई भी एटम है हमारे पास, मान लेते हैं ये एक एटम है, right? ये उसका न्यूक्लियस, सॉरी, एटम का. एंड ये उसके ऑर्बिट्स है, ये उसकी ऑर्बिट है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है that are negatively charged and they lies on this orbit. इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रहते हैं. जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस, उस पे दो पार्टिकल्स होते हैं जनरली, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो ये पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, राइट. सो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पे है, दैट डजंट मीन कि हम
सॉरी, आई मीन टू से अगर कोई बॉडी पे हम पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं, हमें उस पे प्रोटॉन्स ऐड नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाइज इन न्यूक्लियस। अगर हम प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी। राइट, तो हमें जो भी कुछ खेल खेलना है वो उस इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में है उसके साथ ही करना है। न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़खानी करनी नहीं है। That means if I want to write what is positive charge, can I write this is deficiency of electrons? Because protons तो change करना नहीं है हमें. That is deficiency of electrons. Negative charges are excess of electron. Right? अभी ये आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और शार्पन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ आपसे. If an object has a net charge of 1 coulomb minus 1 coulomb, minus 1 coulombs, the number of excess, the number of excess electrons it possesses is the question mark, right? So you can try this question and pause करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें. मैं करवाता हूँ. इसमें क्या बोल रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इट हैज चार्ज ऑफ माइनस 1 कूलम. एक चार्ज है Q that is minus 1 कूलम, राइट. सो हमें ये बताना है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में कितने ज्यादा है, जिससे ये माइनस 1 कूलम चार्ज बना हुआ है. तो कैन आई राइट कि ये जो माइनस 1 कूलम चार्ज है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, राइट. नहीं, राइट. एंड ऑफ कोर्स दिस n इज एन इंटीजर, राइट. कि कभी ऐसा नहीं होगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन रह गया या 0.75 या आधा पौना जो भी है, ऐसा नहीं होगा. हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ऑफ कोर्स दैट इज कॉमन सेंस. ओके, सो कैन आई राइट माइनस 1 is equal to n into charge of electrons, right? इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये चार्ज बना रहा है, right? n इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये चार्ज बना रहा है. एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज into n is equal to टोटल चार्ज, right? मैंने पहले ही बोल रखा है ये कुछ तो मैंने कॉन्स्टेंट्स लिखवा है आपको याद करना है, right? तो चार्ज on an electron is -1.6 into 10 to the power -19. That is minus of electron charge minus E, right? Can I write n equal to 1 upon E is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power 19 coulombs. So, and if we calculate, it comes near to 6.25 into 10 to the power 18 electrons.
समझ रहे हो? एक कूलम चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, राइट? So the next property, property number 7, continuity property. Next property says is like charges repel, and unlike charges attract. That means अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को मैं दोनों साथ में रख दूं, एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रहेगी उसकी। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दो सेम चार्जेस को अगर मैं एक साथ रख दूं तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, टेंडेंसी रहेगी उनकी। और अगर मैं दो ऑपोजिट चार्जेस मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को साथ साथ रख दूं तो दोनों नजदीक आएंगे। They tend to attract each other, right? It's kind of like magnets. Like poles repel करते हैं and unlike poles attract करते हैं. Similar thing is with set of charge. Eighth property is charges are conserved. That means charges is neither created nor be destroyed. Every reaction, in every reaction, the net charge or the total charge on an isolated system remains the same. Ninth comes as charge is quantized. That is nothing but Q equal to N, which we have used in this question, right? Of course, quantization का जो टॉपिक है वो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा ही होगा। ऑफ कोर्स दैट मीन्स कि क्वांटम जो एनर्जी होती है पढ़िए ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटाइजेशन सेम यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस है वो एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाया होता है और उसका छोटे से छोटा पैकेट ऑफ दैट इज चार्ज का जो छोटे से छोटा पैकेट है वो इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही पाए जाएंगे, राइट? ये नहीं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन आ गया या 0.7 में आ गया उससे कोई चार्ज बन गया, ऐसा नहीं होता। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब चाहे तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। The next thing we are going to start is methods of charging। वो हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम कूलम्स लॉ स्टार्ट कर देंगे एंड तब से थोड़ा चैप्टर इंटरेस्टिंग बनता जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और जी लेवल के क्वेश्चंस इन सब कॉन्सेप्ट से आएंगे, राइट? थ्योरी, सिर्फ थ्योरी के लिए ये लास्ट टॉपिक है। थ्योरी इसके बाद ही रहेगी बट न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आएंगे इसके बाद।
So be prepared. That is methods of charging. हेडिंग डाल लीजिएगा आपकी नोट्स में. फर्स्ट मेथड is charging by friction. जो छोटे थे तो आप लोगों में से किसी ने ये किया है, जब बाल बनाने के बाद जो कंघी पे चार्ज आ जाता है और छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़ों पर जब उस पे लेके जाते हैं तो सारे जो पेपर के टुकड़े हैं वो कोम पे अट्रैक्ट होते हैं, राइट? दैट इज नथिंग बट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. मान लेते हैं ये आप इंडिया के बाल है, राइट? और ये है कोम. बाल बनाने के बाद क्या होता है कि हेयर्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. फ्रिक्शन हो रहा है ना इसलिए. एंड जो कोम है उस पे कौन सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैन आई राइट. इट रिक्वायर्स रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट. दो चीजें घिसेगी तभी फ्रिक्शन होगा. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रिक्वायर्स रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. Second is magnitude of total charge on both bodies remains same. Magnify. ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, अगर इनिशियली चार्ज तो जीरो था, राइट? अब जब इसने बाल बना लिए तो क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इस पे नेगेटिव आया. मतलब इस पे जो चार्ज आया सब मान लेते प्लस क्यू आया चार्ज. तो सिमिलरली इधर माइनस क्यू चार्ज आया. क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जब इन दोनों सेम हो गए तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, राइट? Fourth, third property, third point is both the bodies will get opposite charge, right? Both bodies gets opposite charge. That was all. और इतना चाहिए के लिए ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट नहीं है. मेथड्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट, के बोर्ड्स में आ सकता है इसका. हालांकि आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका, इंडक्शन वगैरह का, बट आई डोंट थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट होगा. सेकंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन.
Basically, it requires chain of two objects. For example, मेरे पास ये एक मेटल की शीट है, उस पे मेटल शीट, राइट। ये अनचार्ज्ड थी इनिशियली। अब क्या किया मैंने, एक मैं चार्ज रॉड लेके आया और मैंने क्या किया, इसके साथ टच कर दिया। तो टच कर दिया, रब नहीं किया है, ओनली टच किया, तो क्या हुआ, इसका जो चार्ज था वो इसके साथ इसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्या होगा फाइनल कंडीशन, ये मेटल की जो शीट है उसके पास भी थोड़ा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव वाला। कम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास जो चार्ज था वो आधा इसने इसको दे दिया। कुछ पोर्शन, मतलब आधा तो नहीं, कितना पोर्शन है वो तो अभी हमें आगे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जब सीखेंगे तब की बात है। अभी के लिए इतना समझो कि ये जो चार्ज है इनिशियल ये रॉड के पास, वो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब दो ऑब्जेक्ट टच करते हैं, राइट। हाँ, और इसमें कोई रबिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट फिजिकल इज इनफ। चार्ज gets distributed between the objects. Third point, both the objects will get the same charge, राइट। ऑफ कोर्स, बस ये पॉजिटिव चार्ज का रॉड मैंने इसके साथ टच किया तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो मेटल सरफेस है, राइट। सो मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब ये क्या करेगा, जब इसको फिजिकल टच कर दिए इधर, राइट, ये रॉड सपोज कि इधर टच कर रही है, फिजिकल टच जैसे ही होता है इधर पॉजिटिव चार्ज आया और इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करके ये रोड पे चला जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डेफिशिएंसी हो गई इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, राइट। तो क्या होगा, both the bodies will get same charge, bodies will be charged with same sign, and the third method of charging is charging by induction. कुछ नहीं, चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसी मेथड है जिसमें charged objects are used, charged objects are used to create another
charged objects without losing its own charge. ये कैसा हो सकता है? हो सकता है। See, I am taking this two balls, right? Metal balls, both touching each other in physical contact में आएंगे, right? दोनों एक दूसरे को टच कर रही है। और क्या किया है मैंने, इन दोनों के नीचे प्लास्टिक का स्टैंड लगा दिया। ये अभी दो मेरे पास आयरन की बॉल्स थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसके आगे मैं एक चार्ज्ड रॉड ला रहा हूँ, बट इसको टच नहीं करवा रहा हूँ। ये मान लेते ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड में इसके नजदीक लेके आया, तो क्या होगा, इन दोनों में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो इनसे अट्रैक्ट होंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे इस स्पेस पे आ जाएंगे, इस साइड के ग्लोब पे। टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस एरिया पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस एरिया पे। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ गई, तो इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बट इन दिस केस में अगर इस रॉड को इधर से दूर ले जाता तो वापस दोनों चांद पर अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही ये सिनारियो बन रहा है कि एक साइड सारे इलेक्ट्रॉन्स और एक साइड सारे प्रोटॉन्स आ गए सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रॉड को हटाए बिना इन दोनों के बीच का काट दे रहा हूँ। क्या हुआ, अभी ये सारे इधर सारे इलेक्ट्रॉन्स रह गए, इधर सारे प्रोटॉन्स रह गए, सारे पॉजिटिव चार्ज रह गए, और फिर मैं ये रॉड हटा दे रहा हूँ। तो एक रॉड की मदद से, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की मदद से हमने दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स और बना लिए, और इसने भी अपनी चार्जेस लूज तो किए नहीं, इस पे इनिशियली जितना चार्ज था उतना ही अभी है, right? So induction is a process in which one charged object is used to create multiple other charged objects without losing its own charge. So that was all for charging methods. एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है अर्थिंग और ग्राउंडिंग का, वो भी मैं भी करवा ही देता, तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट क्लास से कूलम्ब लॉ पे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कुछ साइन ऐसा रहता है, राइट। क्या आपने अपने घर पे ऐसा प्लग देखा है, फ्रिज का ओवन का वैसा कुछ होता है क्या, ट्रायंगल होता है, इधर एक बड़ी सी पिन होती है, यहाँ दो छोटी छोटी पिनें होती है, ठीक है, ऐसा प्लग रहता है। तो ये जो उसकी पिन है ना, ये वाली सबसे बड़ी और लंबी, ये होती है अर्थिंग की पिन। खैर ये वाला जो पार्ट है वो हम और डिटेल में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, नहीं पड़ी
any body connected to Earth comes to zero potential। पोटेंशियल जो है उसकी बेसिकली ये फॉर्मूला रहती है स्फेयर के लिए। अभी ये फॉर्मूला देख के डरना मत। इसी चैप्टर में हम सब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और इसके सारे फॉर्मूलेस डिराइव भी करेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना ध्यान रखो कि इसकी ये फॉर्मूला आती है। और अर्थ जो है उस पे चार्ज, नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहता है, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस होते हैं। तो उसमें एक दो चार्ज हम ऐड कर दे या निकाल दे तो अर्थ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स अर्थ जीरो पोटेंशियल पे रहता है। और जीरो पोटेंशियल पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया तो वो भी किस पोटेंशियल पे आ जाएगा, जीरो पोटेंशियल पे, राइट। तो अगर मैं शॉर्ट में हमारा जो भी लेक्चर है उसकी समरी आपको देना चाहूँ तो पहले तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, राइट। चार्ज रेस्ट पे होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, मूविंग चार्ज, कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, एक्सेलरेटिंग चार्ज, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड एनर्जी रेडिएट करता है। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम पढ़ा, देन डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के बारे में पढ़ा, उस कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा, राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक क्वेश्चन किया और कुछ और प्रॉपर्टीज दी, राइट। अब अगर इलेक्ट्रोफिजिक्स और जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट है उस पे आपको स्क्रिप्ट बनानी है, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना, राइट। थोड़ी मैं मानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग और बोरिंग हो जाता है, थ्योरी थ्योरी रहती है तो, बट करना तो पड़ेगा, राइट। अब जब जेई के मैदान में कूद चुके हैं तो फोड़ के ही आना है, राइट। तो थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, वैसे भी हमारा कूलम स्लो स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप स्टार्ट हो ही जाएगा और थोड़ा हमें लगेगा कि ना हम जेई के लिए तैयारी करें, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डे। Do like, share and subscribe to this channel, and thank you very much.